name is Sonam Sandhu and I am a certified IELTS trainer. I help students clear their IELTS exam. Guys, this is the 9 band for reading. Okay, so how can you get 9 band in reading? You can get 9 band with this vocabulary. And guys, this is the third part of the vocabulary series related to reading module, and in this part I am going to cover the vocabulary related to technology. In the previous 2 parts I have already covered the vocab related to plants as well as related to environment. Yes, it is environment, not environment. ठीक है, आगे proceed करते हैं. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स हमने करने, बट व्हाई इज वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट गाइस? द मेजर प्रॉब्लम्स इन रीडिंग मॉड्यूल आर only twofold. So I would say the first one is vocabulary and the second is understanding. So for understanding you have to read a lot, you have to translate, and if you will translate in mother tongue, if you will read a lot, that understanding problem will definitely be solved. But for vocabulary you have to create. So what exactly can be done? Let's say today you are doing a passage related to technology. Apart from the words I am going to discuss in this video, when you are doing a new passage on technology, I'll request you all to add those words in your technology vocabulary. ठीक है? Apart from all these words, if you will be creating words related to, if you will have more words related to various topics like environment, plants, technology, education, you will get better in reading day by day. So let's get started without wasting further time. So guys, here the first word is interlock. Interlock का मतलब होता है फिट होना या clasp together, साथ में उलझ जाना. ठीक है, इंटरलॉक हो जाना. जिप्स इंटरलॉक होती है ना, सो वो चीज. डिस्टॉर्ट मतलब होता है मिस शेप हो जाना या आउट ऑफ शेप हो जाना. फासन का मतलब होता है अटैच करना या कनेक्ट करना. सो व्हाट इज फास्टनिंग? फासन अ सीट बेल्ट. So that is like connect a seat belt, attach a seat belt, that is fastening. Patent. Patent is a noun as well as a verb. Patent होता है कि she has got the patent for this particular product. She has got her product patented. So it is like a grant of ownership. कुछ आपने create करा, उसको आपने patent करा दिया, तो कोई भी उसे copy नहीं कर सकता. जैसे copyright होता है for the text, ऐसे ही patent होता है for the products. Next is casts. Casts एक noun है. सांचा, हिंदी में हम इसे सांचा बोलते हैं, बट इट इज लाइक अ डाई और अ मोल्ड. किसी मोल्ड में किसी चीज को सेट कर देना, दैट इज लाइक कास्ट. देन एंटैंगल्ड. एंटैंगल्ड का मतलब होता है टैंगल हो जाना है, ट्विस्ट हो जाना. एंटैंगल्ड इज टैंगल्ड और ट्विस्ट, उलझ जाना, उलझ जाना. नेक्स्ट इज एक्सेसिबल. एक्सेसिबल इज एन एडजेक्टिव which means easy to access and approach. Accessible is an adjective which means किसी चीज को easily access कर लेना या approach कर लेना, मतलब you are allowed to enter. Okay. Rationalized. Rationalized means to make logical. किसी logical चीज के बारे में बात करना. Something logical is also known as rational. Then enmeshed. Enmeshed is caused to become entangled in something. किसी चीज में उलझने का कॉज करना, दैट इज एनमेश्ड. इनफॉलेबल. इनफॉलेबल इज विदाउट फॉल्ट और वीकनेस. विदाउट फॉल्ट और वीकनेस इज इनफॉलेबल. नेक्स्ट इज आउट परफॉर्मिंग. टू परफॉर्म बेटर देन समथिंग और समवन, किसी से बेटर परफॉर्म करना. सो आई आउट परफॉर्म्ड हर इन क्रिकेट. फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर आउट परफॉर्म्ड एनी वन इन क्रिकेट और in cricket or in sports, but yes you can say so. आउट परफॉर्म होता है किसी से बेटर परफॉर्म करना किसी चीज में, या किसी से बेटर परफॉर्म करना. रिजेस होता है हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यूजुअली फिंगर्स के केस में यूज करते हैं रिजेस. ठीक है. फ्यूरोज होता है अ डीप रिंकल इन द स्किन. इट कैन बी स्पेशली ऑन द फेस और फोरहेड, दोज आर फ्यूरोज. वैसे फिंगरप्रिंट्स के लिए भी हम यूज करते हैं कि फिंगरप्रिंट्स में रिजेस भी होते हैं और फ्यूरोज भी होते हैं. जो डीप रिंकल होता है फिंगर में, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दैट इज फ्यूरो. बकलिंग मतलब होता है वेवी, कर्ली, और वैसे इसका एक और मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ फास्टनिंग अ बकल. सो इफ यू आर फास्टनिंग अ बकल, इफ यू आर कनेक्टिंग अ बकल, दैट इज ऑल्सो नोन एज बकलिंग. द नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स इनटू, आउट ऑफ और फ्रॉम एन अकाउंट, दैट इज ट्रांजैक्शन. कि ट्रांसफर करना फंड्स को इनटू, आउट ऑफ और फ्रॉम एन अकाउंट. Potential. Potential is the ability to do something. So she has the potential to score all 9. She has the potential to score 8 in writing. Okay.
नेक्स्ट इज प्रोपेल्ड. प्रोपेल्ड होता है किसी चीज को आगे लेके जाना, टू ड्राइव फॉरवर्ड. इट इज प्रोपेल्ड. ठीक है, टू ड्राइव फॉरवर्ड और टू कॉज टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन. प्रोपेल्ड. कॉन्विक्टेड, किसी चीज के, सो ही इज द कॉन्विक्टेड. ठीक है, सो टू फाइंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, किसी कोई ही इज कॉन्विक्टेड. सो व्हाट, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम. ओके. मेमिंग होता है किसी को बहुत ही सीरियसली वुंड कर देना और किसी का एक परमानेंट लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी. मेमिंग इज टू कॉज परमानेंट लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी. पेनिटेंशियरी. पेनिटेंशियरी इज अ स्टेट और फेडरल प्रिजन फॉर कन्विक्टेड फेलेंस. फेलेंस क्या होता है? क्रिमिनल्स. किसी ने कोई ऑफेंस करा होगा, फेलेंस भी बोलते हैं उन्हें. ठीक है. देन वी हैव परपिट्रेट. परपिट्रेट होता है टू बी गिल्टी ऑफ, किस कोई पर्सन जो गिल्टी है. ठीक है, टू बी गिल्टी ऑफ, सो टू बी गिल्टी ऑफ, रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ क्राइम. परपिट्रेट. परपिट्रेटर इज प्रिजनर और अरेस्टी. परपिट्रेटर कौन होता है? जो कि प्रिजनर है या अरेस्टी है. ठीक है, सो ही इज द प्रिजनर और ही इज द अरेस्टी. दैट इज द परपिट्रेटर. So guys, all these words have been used in the passage related to technology. Now what I'll suggest, this is not all. Guys, when you will be doing some vocab related to some passage related to technology, you will see that some of the words are matching. Now what exactly you need to do? Next is, whenever you are doing a passage or a reading passage on technology, you are going to add those words in your notebook. पहले तो ये वाले वर्ड्स आप अपने जाके वोकैबुलरी नोटबुक में लिखो और फिर वो वाले वर्ड्स भी ऐड करते जाओ. जब भी नया पैसेज करते हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऐड दोज वर्ड्स. So guys, that's all for today's session. I hope you liked the session. If that's a yes, do consider subscribing to the channel. And yes, if you really like it, share it with those in need. Thank you so much guys. Bye bye.